Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. Ashmita, will you introduce yourself to the board members? Yes, sir. My name is Ashmita. I did my schooling from Army School, Danapur, Kant. Thereafter, I did my graduation from Tata Institute of Social Sciences, Tuljapur campus, which is in Maharashtra. I like to spend my time with my pet dog named Bela, and also I like to rearrange my personal space. Very good. Ashmita, today is a special day. What is the date today? 24th of April. What is special about it? I believe it's the Panchayati Raj. No, that's... Sorry, sir. You have no idea. No idea, sir. Do you know anything about basic structure of the constitution? Yes, sir. Any idea about Keshavnanda Bharati case? Yes, sir. Today is that date Yes, sir. and that judgment was delivered. Yes, sir. Okay. Who was that Keshavnanda? Mm. Sorry, sir, I can't remember right You now. don't know Keshavnanda. You must be knowing Keshavnanda Yeah, yes, Bharati sir. case. Yeah. Why Keshavnanda went to court? So can I take a second to think about? Sorry, sir. Oh, I no can't. problem in that. Ashmita, you might have noted one thing in Indian, polity, that whenever the government becomes powerful in a sense that when they get the majority, full majority, absolute majority, Supreme Court becomes subdued, very, very humble. And whenever the government is weak, the central government is weak, Supreme Court becomes powerful. Can you tell me some of the instances from the last 70, 75 years when you have seen this kind of a trend? Sorry, sir. I Okay, can't. no problem. You did your research project, sociology, from where? Tata Institute of Social Sciences. Okay. And you have done, you had your economics paper also, political science also. Yes, sir. That was basically a minor paper. Major was research project in sociology. Okay. What do you think about Marxism? Is it good or bad? Marxism is an ideology which talks about basically it was propounded by Karl Marx, who was a sociologist, and he talks about how the class struggle leads he talks about how the class struggle leads to basically he talks about classes. He divides the society into two classes, haves and haves not, which he calls as proletariats and the bourgeoisies. He further illustrate how the bourgeoisies are taking the owner of the forces of production, and how they are somewhere trying to exploit the labor class, which is the proletariat class. And so the entire theory talks about having how the proletariat class should come together, and they should form a class for itself and further struggle for their own rights. That is what, according to you. What is the difference between Marxism and Maoism? Marxism. Sorry, sir. No can't problem. recall. Okay. Tell me one thing that one of the reputed institutions of India, wherein we have seen some of the professors, they are making some of the, anti-national
speeches, giving anti-national speeches before the students community. A film has been made just few days back. It was released, Kashmir Files, you might have seen, and Radhika Menon, and the real person is Nivedita Menon. Do you think that it's good to give these kind of speeches before the student community against a nation? I believe we are in a democracy where we have a right to freedom of expression and speech, but yeah, there are certain limitations to this article which an individual or a group should maintain. But dissents constitute a special. They have a special role in democracy, and keeping your ideas to an extent which does not infringes or was she expressing her dissent, or it was tantamount to anti-national activities, according to you? So I have not seen that statement, what she has made. Okay. So, but you must have seen the movie? No, not yet. You are a student of sociology, and this is such a famous movie today. Anyways, tell me, Marx was against the state. Marx was against the state. Right. But still the, CPIM, CPI, these political parties, they're joining democracy, they are getting elected, forming government. So these, do you think these, parties are really Marxist parties? Because Marx was against the state. Because Marx said that state is nothing but a cluster of bourgeois people. Yes. And these people are joining politics, getting elected and become a part of the state. Are they truly Marxist? Somewhere they try to be. Sorry, okay, sir. No problem. Marx was against the state. Gandhi, what about Gandhi? Was he against the state? No, sir, he was not against. He was against the state. Okay. Gandhi was an anarchist. Okay. Gandhi was against the state. Marx was against the state. These are the similarities that we can find between these two great men. Why is there this similarity between Gandhi and Marx? Somewhere both of them were talking about the welfare of the people, and they wanted a state which Marx never said that state will do welfare for the people. Right. In fact, Marx said the opposite. That the state will actually exploit the people. Right. Sorry, sir. Okay, the last question from my side, Ashmita. Supposing you are a creative person, you are a director, let's say, and something like, what has happened in Kashmir, where one community was, driven out, and the reality also, you have seen, you have talked to the people, they have also expressed their grief before you, and you want to make a movie. And that, just like Kashmir Files, you want to make a movie. But at the same time, you know that if I make a movie of this sort, there will be a communal flare-up, communal riots and all. What will you do? Will you go ahead with your idea and make a movie, or else not make that movie? I'll definitely go ahead and make a movie, but somewhere I'll try to... You cannot be politically correct. You have to show the things which happened actually. But when you show them as it is, there's a fear that there will be a communal flare-up, communal violence. What will you do? Sorry. No problem. स्मिता राइट? Yes, sir. ये आपने लिखा है कि रीअरेंजिंग माय पर्सनल स्पेस, क्या होता है ये? क्या है ये? कैसे आप क्या करते हैं इसमें? So basically अपने अकॉर्डिंग अगर मेरा एक जो रूम है उसके अकॉर्डिंग देयर आर 2 सेट्स ऑफ टेबल एंड चेयर, तो उस हिसाब, और एक बेड है मेरा छोटा, और
जैसे अभी इंटरव्यू के तैयारी के लिए मैं जैसे एक ऑफिस चेयर है और एक डाइनिंग चेयर है, तो समवेयर आई ट्राई टू रीअरेंज अकॉर्डिंग टू माय ओन स्पेसिफिक एक्टिविटी सो दैट वो मेरे नीड्स को फुलफिल कर पाए, और कहीं ना कहीं वो मुझे सेटिस्फाई करता है, एंड समवेयर इट मोटिवेट्स मी एंड लिफ्ट्स अप माय मूड. ओके, ठीक है. ओके, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, राइट? यस सर. तो मुझे बिहार के कुछ सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं. So, majorly unemployment, poverty, then एक दो और बताएं. ओके, कोई नहीं, ठीक है. पॉवर्टी बिहार में इतना ज्यादा क्यों है? क्या रीजन, आपको क्या लगता है, क्या कारण? sorry sir. ओके, कोई. Ashmita, sociology as optional Yes sir. and graduation from Tata Institute of Social Sciences. Okay. Recently, there has been a connection between Tata Institute of Social Sciences and Bihar in recent years. How this test is associated with Bihar issues? There is a test center in Patna itself, which if I remember correctly, there was an issue of home shelter case where the test research Patna has given the report about some politicians involved in that home shelter case. So that way, somewhere they were involved in the research work, and they gave their own analysis about how the some of the reputed politicians were involved in the case. And going by your educational background, there has been lots and lots of study regarding the societies. Yes, sir. Okay, so how this is going to benefit you in your administrative job? I believe at the end of the day, we have to work in society. So, after reading a lot of theories about sociology, and also did some of my fieldworks in Tuljapur place itself, it gave me it provided me an idea about how the human relations and how the human behavior are work in a society, how they are interacting in a society. So that way, we have to work with the people. We have to work for the welfare of the people. So after reading theories and doing a bit of field work, I believe that has somewhere helped me in understanding the society well better. Take care. And during this month, April, we have celebrated some important days. Can you tell me some of Yes, the sir. important days that we have celebrated? On the 21st of April, Civil Services Day. On 22nd of April, World Earth Day. And this much I am remembering, sir. Civil Services Day is celebrated 21st of April. Why? I have no idea what. And why Earth Day? When it started, the celebration of Earth Day? I believe in 1973. 1973. And what was the theme of this year's Earth Day? Invest in our planet. What does it mean, invest in a planet? It basically means how that the economic growth should go in tandem with the natural resources, so that we can have sustainable growth in the society. Somewhere the economic growth shouldn't be degrading the society. It should keep environment in. Okay, and any other day in the month of April that we have celebrated, either on the state level, national level, international level? Sorry, 14th sir. April, it's celebrated as? Sorry, sir.
Okay, Ashmita, we'll give you the feedback. Thank you, sir. Ashmita, कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं. You're such a good candidate. You're such a good candidate. In fact, मैं आपको उस दिन बोल भी रहा था कि आप आराम से इस बीपीएससी के इंटरव्यू तो निकाल सकते हैं. I was just a bit nervous. अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को वो कर लो. नर्वसनेस का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई मार्क्स वार्क्स थोड़ी दे रहे हैं. यहाँ तो मार्क्स वार्क्स नहीं दे रहे हैं. सर आते हुए भी मैं बोल नहीं पाई. वो पता चल रहा है। वो फर्स्ट नहीं, ये सबके साथ होता है. कम ज्यादा 19-20 का फर्क होता है. आपको पानी है दीजिए। वहाँ पे अगर हमें बिठा दिया जाएगा, हमारे भी वही हाल होगा. सबके साथ होता है, वो कोई बहुत हम बड़ा लोग बात भी वहाँ बैठे हैं, मुझे पता है कि वहाँ बैठना उनका आसान नहीं होता है. नहीं। मैं तो इतना बार बैठा हूँ कि मत पूछो। नहीं, वो सबके साथ है. चाहे वो सिलेक्शन के बाद कुछ भी गए, वहाँ पे बैठना अलग चीज है और यहाँ बैठ के क्वेश्चन पूछना अलग चीज है. और वो दिख भी रहा था, आप अभी बोल रहे हो दैट्स, लेकिन वो दिख रहा था. ठीक है, तो मे भी कुछ इश्यूज रहा होगा. ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं बस यही है ना कि पहला एक्सपोजर है, yes, और तो कुछ नहीं है. ठीक, पूरी देन बात- इट्स नेचुरल, कोई बात नहीं. ये प्रोसेस है एक्चुअली ना, ये जो इंटरव्यू के लिए पता है ना अमिताभ बच्चन कितनी बार रिजेक्ट हुआ. ऑल इंडिया रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दिया कोलकाता में. बोला तुम्हारा वॉइस खराब है. बहुत और भारी वॉइस के लिए पूरा बहुत वर्ल्ड भारी है. और उसी के लिए पूरा आज वर्ल्ड उसी वॉइस से पूरा सुनने वाले वर्ल्ड और सारे एडिटिंग करवाते हैं. तो इट्स नेचुरल. हाँ, कोई और इशू है तो यू शुड सॉर्ट इट आउट. सब कुछ ठीक है, बस वो फर्स्ट टाइम था, इस हाँ। कारण से थोड़ा सा ठीक. होता है। और बहुत ज्यादा आप कॉन्शियस हो गए, हाँ। ओवर कॉन्शियस, इतना कॉन्शियसनेस. सवाल आते के साथ I was just blank. I don't know how to. ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. पहले तो अपना पोस्चर सही कर लो. आपके लेग्स क्रॉस हो रहे हैं, आपके हैंड्स क्रॉस हो रहे हैं, थोड़ा हेड मूवमेंट हो रहा था. ये आप नहीं भी बोलते तो हम लोगों को पता है कि क्या चल रहा था. ठीक है, कोई बात. स्टेबल. हाँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है अस्मिता. आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट इट. ठीक है ना. एक दो चीजें हैं ना जो बेसिकली प्रैक्टिस का बात है. ये फर्स्ट टाइम आपने दिया है ना, इसलिए ऐसा है. और 19-20 का फर्क सभी के साथ ऐसा ही होता है. किसी का इसमें प्रॉब्लम है, किसी का दूसरे किसी जगह पे प्रॉब्लम है. तो जो मुझे ऐसा देख रहा था कि हुआ क्या इस होल इंटरव्यू में. देखिए क्या होता है, 20-30 मिनट का इंटरव्यू होता है. बीच में एक आधा मिनट स्ट्रेस मैनेजमेंट को चेक करते हैं. तो या तो शुरू में करेंगे, बीच में करेंगे, लास्ट में करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे पक्का. क्योंकि उनको देखना है कि कैंडिडेट को अगर स्ट्रेस में अगर डालते हैं तो कैंडिडेट किस तरीके से बाहर आता है ना. तो आपके किस में स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू में ही हो गया. तो जिस वजह से हुआ क्या, मुझे देखा कि चोक हो गई. हाँ. उसके बाद जैसे सर का क्वेश्चन था कि पॉवर्टी के रीजंस, आई एम श्योर 1000% कि आप रात को भी 12 बजे कोई उठा के बोलेगा कि बताओ पॉवर्टी के रीजंस क्या है, तो you'll be able to explain. और एक्सप्लेन क्या, you'll be one of the top answers आपका होगा. लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स ये सब तो आपको बहुत अच्छे ये से एक्चुअली वो उसमें से वो आपके माइंड में घूम रहा है कि शुरू का जो फेज है, मेरा वाला जो फेज है, वहाँ पे आंसर नहीं हो पाया. तो इंटरव्यू में ना हमें ये सब भूलना पड़ेगा. फेज में होता है. मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यूपीएससी वाला. 5 मिनट अच्छा चला, 5 मिनट खराब चला, फिर 5 मिनट अच्छा चला. मतलब ये डिपेंड करता है. शुरू का 5 मिनट मान लो आपका खराब गया, इसका मतलब नहीं कि बाकी का 25 मिनट खराब जाएगा. आपको वहीं पे पॉज करना है, उसको भूलना पड़ेगा. फिर बाकी का 5 मिनट आपको ठीक चलाना पड़ेगा. तो वो जनरल एक वो देखते हैं. ऐसा नहीं कि 5 मिनट आपका शुरू का खराब हो गया तो इसका मतलब बाकी सब क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. ये ऐसा होता है. और मैंने क्वेश्चंस इसलिए थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाया था क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा था और कुछ नहीं है ना. अदरवाइज कोई और कैंडिडेट हो तो मैं पूछता ही नहीं है सब चीजें. हम लोग ये पूछते नहीं है क्योंकि आप यू आर ए नोन कैंडिडेट टू अस. तो हमें लगा कि थोड़ा सा लेवल आपका जो है. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका यहाँ पे 10th एंड 12th में गोल्ड मेडलिस्ट, स्कूल टॉपर इन 10th एंड 12th, गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन. तो ये मजाक तो है नहीं. ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हमें तो कभी मिला नहीं है ना. तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट. इसलिए ना आपसे थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा. और यहाँ पे जैसा रिसर्च प्रोजेक्ट आपने सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जेएनयू वाला आपने हटा दिया.
नहीं डाला नहीं था क्योंकि सर उसका तो कुछ है भी नहीं, इसी है बस मेरे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता दे, लेकिन फिर भी हम आप बच नहीं सकते क्योंकि सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स है ना, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मुझे जो ऐसा लगा कि आपके माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पूरे, बोलूं ना बोलूं, गलत तो नहीं हो जाएगा, यू आर टोन इन बिटवीन दिस टू, जिस वजह से इवन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ना, वहां पर भी आपने गिव अप कर दिया कि छोड़ देते हैं, है ना, ये इससे बाहर आना पड़ेगा। You have to take a stand. You have to take a stand, but of course stand के पीछे कुछ reasons होना चाहिए, कुछ basic rational होना चाहिए। अगर है तो you can speak out. अगर आपको आर्टिकल का भी सहारा लेना पड़े, आर्टिकल 19 का सहारा लेना पड़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का सहारा लेना पड़े, तो जैसे क्वेश्चंस मैंने पूछा एज अ डायरेक्टर आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स कुछ रैशनल के ऊपर बेस बना के वी कैन गिव एन आंसर कि दिस इज व्हाट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। एंड ये मतलब इफ का इफ नहीं होता है, इसको हम प्रीपोंडरेंस ऑफ इफ बोलते हैं, इफ का इफ कुछ नहीं होता है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पास आते, मैं बोलता हूँ ये दवाई ले लो, आपने बोले कि सर अगर दवाई लेने के बाद फिर उल्टा हो गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा, फिर मत लो, है ना। ऐसा इफ का इफ कभी नहीं होता है। आपको क्या बोलना है, जो भी कुछ बोल रहा है उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, उस रीजन को बेस बना के बोल देना। अब वो बोलेंगे कम्युनल फेयर अप होगा, कम्युनल वायलेंस होगा, तो दैट इज नॉट द केस ना। तो आपको जो भी रीजंस लेना है, देना है, डिसीजन देना है, वो किसी ग्राउंड के ऊपर बेस करके देना पड़ेगा। वो मुझे लगा कि यू आर नॉट फाइंडिंग दैट ग्राउंड, जिस वजह से यू स्किप्ड दैट पर्टिकुलर कि मुझे नहीं आता है। बट योर फ्लुएंसी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि माइंड में कंफ्लिक्ट होने के कारण आर्टिकुलेशन नहीं हो पा रहा था। आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा था कि ठीक तरीके से जो आर्टिकुलेट करना जिसका हम बोलते हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, वो नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज अस्मिता, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम विल डू गुड, है ना, बहुत अच्छा होगा। और बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना। हाँ, ये बहुत ज्यादा टेंशन लेना, कभी प्रॉब्लम हो आप फोन कर लेना हमें, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन एकदम नहीं लेना, ठीक है। सिंपल, आपको तो सब आता है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चंस में आप कहाँ परेशान हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ, 2-3 जगह पे लेग मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, हेड मूवमेंट सब कुछ हो रहा था। हेड एक बार बेंड भी हो गया था कई टाइम, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसको कम करना, बाकी तो सब कुछ बेहतर है और अच्छा होगा। नेक्स्ट बार और बहुत आप बेहतर करोगे, आई एम डन श्योर, ठीक है, ठीक है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।